So wait, India is the best. We love India. Bharat Mata ki Bharat Mata ki इकबाल मानता हूँ, मैं खुश नसीब हूँ। आज टू मच लकी क्योंकि मैं यहाँ हूँ। आप सब स्वीट सिंसियर स्टूडेंट्स मेरे देश का भविष्य हो। तो सबसे पहले आज आपके सामने होगी ओनली इंडियन के दिल की बात। आज जो आपके सामने है वो है ओनली इंडियन की दिल की बात। क्या है? एक कोशिश मेरी, एक कोशिश तुम्हारी और एक कोशिश हम सबकी हमारी। सबसे मुझे प्रदूषण मुक्त विषय चाहिए। कहीं वायु हवा का प्रदूषण, आवाज का प्रदूषण नहीं चाहिए। मुझे स्वच्छ भारत चाहिए, मुझे स्वस्थ भारत चाहिए, हेल्थी इंडिया, लवली इंडिया चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि साबरपुर स्कूल के शिक्षक शिक्षिका जी के द्वारा आपको ऐसा शिक्षा मिले, आपको ऐसा राष्ट्र के लिए प्यार हो कि आपका स्कूल का, आपके मम्मी पापा का, आपके अम्मी अब्बा का, आपके फादर और मदर का, साबरपुर गांव का, गुजरात का और मेरे देश का नाम रोशन हो। आप इतना पढ़ो आगे बढ़ो। और इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं आज आपके सामने एक 15-20 मिनट लिए मैं मेरी बात करूँगा। लेकिन मेरी दिल की बात कहूँ उसके पहले मैं आपको पूछ लेता हूँ 3 सवाल। पहला सवाल कि मैं मेरी बात कौन सी भाषा में करूँ? તમારી માતૃભાષા ગુજરાતીમાં બોલું, મારી રાષ્ટ્રભાષા હિન્દીમાં કહું, જેમાં કહું એ મને કહેજો, જેમાં તમને મજા આવે એમાં આપણે વાત કરશું। હિન્દીમાં બી કહી શકતા હું या ગુજરાતી में કહી શકતા હું। બીજી વાત, બીજો પ્રશ્ન બોલો તો ગુજરાતીમાં કહું કે હિન્દીમાં બોલું? તો માતૃભાષાને પ્રેમ કરાય, માતૃભાષા તમે ગુજરાતી છો તો ગુજરાતીમાં ભણાય, ગુજરાતીને પ્રેમ કરાય। તમે બંગાળને છો તો બંગાળીને પ્રેમ કરાય, પંજાબને છો તો પંજાબીને પ્રેમ કરાય, દક્ષિણ ભારતમાં હો તો તમિલ, મલયાલમ, કન્નડ અને ઉડિયાને પ્રેમ કરાય, રાજસ્થાની છો તો પધારો મારે દેશ, हाँ हमार बोंगला, हमार सोनार भांगला, तो आप मारवाड़ीने प्रेम कराय। तो राष्ट्रभाषाનું પડતો રાષ્ટ્રભાષાનું સન્માન કરાય। હંમેશા હિન્દી, દરેક ભારતીયને હિન્દી આવડવું જ જોઈએ અને દરેક ભારતીય હિન્દી ભાષા શીખવું જોઈએ। તો જ આ દેશમાં તમે ગમે ત્યાં જાઓ